Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. Till date, we have done tangent, normal, and pedal equation of the curve, and we have discussed several problems on this particular article. Today, we will discuss more important concept and that will be very helpful in our practical life. In lower classes, you people know that the perimeter of the circle, वृत्त के परिधि की लंबाई या वृत्त का परिमाप. Perimeter of circle, वृत्त की परिमाप. Suppose this is a circle and its radius is suppose r. Then its perimeter is 2πr. ये जो सूत्र है, ये फॉर्मूला जो है हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है. क्लास 6 से हम इस फॉर्मूले को पढ़ते हुए आ रहे हैं. पेरीमीटर या परिधि की लंबाई मीन्स ये जो कर्व है, इस कर्व की लंबाई ज्ञात करना. इस कर्व की लंबाई ज्ञात करना. सर्कल के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है 2πr. लेकिन यदि सर्कल की जगह कोई और कर्व हो, instead of circle if we have any other curve, suppose I say the parabola for example, then how to find this particular length? Means suppose this point is P, this point is Q, then how to find the length of arc PQ? चाप PQ की लंबाई कैसे ज्ञात करें? This is the problem. Suppose this is the arc of the parabola, that is this one. How to find the length of this one? Remember, it is not a straight line. If it is straight line, then with the help of ruler we can calculate, or with the help of some other tool we can find its length. This is the arc, curved part. But in lower classes we know the formula, but how to find this 2πr? ये फॉर्मूला आया कैसे, ये बना कैसे, इसका डेरिवेशन क्या है? सर्कल के लिए हमने पढ़ रखा है इसको. लेकिन यदि सर्कल के लिए कोई और कर्व हो, जैसे मैंने पैराबोला के आर्क लिखा, इसका लेंथ कैसे कैलकुलेट करें, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. उसकी हेल्प के लिए कौन से फॉर्मूले यूज होंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे. सो लेट अस कंटिन्यू. फर्स्ट वी डिराइव some important results, then we apply them. Okay, so let us see. Suppose this is any curve and this is the fixed point A. Length of the curve or length of the arc is measured along the curve from the fixed point A. Length of the arc is measured along the curve from the fixed point A. This is the curve. This is the fixed point. So
इस कर्व की जो ये आर्क है इसके लेंथ हम कहां से मेजर कर रहे हैं? ए से. सपोज देयर आर टू adjacent points on the curve, that is PQ. Let P and Q be two neighboring points on the arc of the curve. Neighboring points means पड़ोसी. I join these 2 points. See. So this is Jiva PQ, or I say chord PQ, or I say line segment, just like this. This part, this pink color, this is arc PQ or PQ और इक्विवेलेंट बात है. इसको कैसे रेट करते हैं? आर्क PQ and this is chord PQ. So this chord is of this arc length. Suppose this is the tangent. Tangent at P, I just proceed this and drop the perpendicular. Suppose this point is 10, for example. Okay. Remember, this is any curve. Length of the arc is measured along the curve from the fixed point A. A fixed point है और जो आर्क है, जो चाप है, चाप की जो लंबाई है वो हम इस वक्र के अनुदेश ले रहे हैं और ये पॉइंट A जो है फिक्स्ड है. P and Q, these are two neighboring points, पड़ोसी पॉइंट्स है. P पर ये टेंजेंट है, so it is tangent at P. This is the chord and this is the arc. This pink one is the arc. Okay, arc P. Or I can say like this. This is the perpendicular. Now, obviously, this arc length is greater than this chord length. Obviously, स्पष्ट रूप से length of chord PQ is less than the length of arc PQ. जीवा PQ की लंबाई is less than चाप PQ की लंबाई. ओके, पिंक वाला जो पार्ट है इसकी जो लेंथ है वो इससे ज्यादा है. सो कॉर्ड ऑफ लेंथ जो ग्रीन वाला पार्ट मैंने बना रखा है, सो जीवा की जो लंबाई है वो इस चाप के
लंबाई से छोटी है। सो जीवा PQ की लंबाई इज लेस देन चाप PQ की लंबाई। लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ इज लेंथ ऑफ आर्क PQ। अगेन from the figure, length of arc PQ is less than PM plus MQ. PM, this plus this one. So from the figure, length of arc PQ is less than this plus this length. यदि आप यहां से मूव करना स्टार्ट करते हो इस कॉर्ड के अलोंग और आप इस आर्क में मूव करते हो तो डेफिनेटली आपको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा इसके अपेक्षा। यदि आप यहां तक जाते हो फिर यहां से यहां तक जाते हो तो इन दोनों डिस्टेंस का जो सम है वो डेफिनेटली इससे ज्यादा होगा। सो length of chord PQ is less than length of arc PQ and length of arc PQ is less than PM plus MQ. Therefore, chord PQ is less than arc PQ is less than PM plus MQ. From the figure, chord PQ means this straight length less than arc PQ means this pink one is less than PM plus MQ. PM plus MQ. This implies dividing by PQ. This is 1 less than arc PQ upon chord PQ is less than PM plus MQ upon PQ. chord PQ ये भी लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड, इसके ऊपर मैंने बार लगा रखा है, अब मैं नहीं लगाऊंगा, नहीं लगा रहा है। ये भी एक रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड और ये भी रेखाखंड है क्योंकि ये जीवा है, कॉर्ड है। सो डिवाइडेड बाय दिस लेंथ वी गेट दिस अपॉन दिस विल बी 1, सो इट इज 1 इज लेस देन आर्क ऑफ PQ अपॉन कॉर्ड ऑफ PQ लेस देन PM प्लस MQ अपॉन PQ। Suppose this angle is alpha, for example. Okay, so let us see. This is 1 is less than arc PQ. I make this design upon chord PQ. It is this. This is less than PM upon PQ plus MQ upon PQ. 1 less than arc upon this chord less than PM. PM is this upon PQ. Upon PQ आधार बटा कर्ण, base upon hypotenuse. This is the base PM upon PQ. So it is base upon hypotenuse, that is cos. This is cos alpha plus MQ, that means perpendicular opposite to this, so it is MQ upon PQ, perpendicular upon hypotenuse, लंब बटा कर्ण, that is sin, so it is sin alpha. It is this. So चाप means arc length, this is the chord length, चाप की लंबाई और उसकी जीवा की लंबाई। ध्यान रखना ये जो जीवा है वो इसी चाप की है, वो इससे
चाप के इसी आर्क की जो है जीवा बनी है और किसी के नहीं है, ये जीवा इसी चाप के लिए है। सो इट इज 1 इज लेस देन दिस वन, लेस देन cos alpha plus sin alpha. Now when q tends to p, now we apply the limit. We want to discuss the limiting value of this. So when q tends to p, ये जो पॉइंट है वो इस तरफ मूव करता है. बाय द वे, सपोज एट दिस पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल this is the point q here, then if I join this point, then you say this angle will be decreased. Which one? This alpha. Alpha कम होता जाएगा. So when q tends to p, alpha tends to 0. Then 1 less than arc pq upon chord pq less than alpha tends to 0, cos 0 is 1, sin 0 is 0. So it is 1 plus 0. Okay. So this implies 1 less than, this is arc length PQ upon chord PQ, that is less than 1. When a quantity is less than and greater than to the same number, then it is arc PQ upon chord PQ is equals to 1 when q tends to p. This is very important. Therefore, limit q tends to p, arc PQ upon chord PQ is equals to 1. This is the ratio of arc length to chord length. Okay. So you just remember this. Ratio of arc length to its chord length. This we have calculated. What is the arc length? Chord length, that is when q tends to p, that is equals to 1. Very important article. This you have to remember. So arc length upon chord length when q tends to p, that is equals to 1. तो जब q पॉइंट जो है वो p पर होगा, जब q और p दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, q पॉइंट्स q के ऊपर हो जाएगा, तो ये जो एंगल है वो घटता जाएगा और 0 बन जाएगा और ये कॉर्ड जो है वो टेंजेंट में मर्ज हो जाएगी. तो लेंथ जो है इसका PQ का, कॉर्ड का और आर्क का जो लेंथ है उसका जो अनुपात है, उसका जो रेशियो है वो 1 के इक्वल है. इसलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. कई बार ये पूछा जाता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू इट्स कॉर्ड लेंथ, देन दिस इज इक्वल्स टू 1. ओके. Now we come to the next part of it. We will use this result derivative of an arc length. चाप की लंबाई
of colors. Okay. Suppose this is any curve. Cartesian curve. Its equation is given in the Cartesian form. A with a fixed point. A. Length of the arc is measured along the curve from fixed points A. चाप की जो लंबाई है वो स्थिर बिंदु A से वक्र के अनुदेश नापी गई है. Length of the arc is measured along the curve from fixed point A. Suppose P and Q be two adjacent points on the curve. P having the coordinates x comma y and Q having coordinates x plus delta x, y plus delta x with two neighboring points, two adjacent points on the given curve. Since the equation of the curve is in Cartesian form, so we are writing the coordinates of the points in Cartesian. So it is xy and its neighbor point, that is x plus delta x and y plus delta y. So let us see. This point is P and this point is Q. Coordinates x plus delta x, y plus delta y. And this point is x comma y. Okay. Cartesian system, so x axis and y axis. So this is the origin. Let us draw the perpendicular from P and Q. Suppose this is N, this is N, and here it is. Suppose this is K, for example. So P having coordinates x comma y, so this distance is x and this is y, and this is x plus delta x, so this part will be delta x from this to this, and from this to this will be delta y. Okay, because this is y plus delta y and this is y, so this is delta x and this is delta y. Length of the chord, let us suppose it is delta L, for example, delta L. I see. And the arc AP, suppose this is S and this is delta S. This length is delta S. Let AP is S and AQ is S plus delta S, therefore arc PQ is delta S. Arc PQ, this will be this minus this, so this length is this one. Let chord PQ
this is delta L, for example. Okay, so this is the particular type of situation. Now this is the right triangle, you can say. So in triangle PKQ, we get this delta L whole square equals to delta x whole square plus delta y whole square. Delta x whole square plus delta y whole square equals to delta L whole square. On dividing by delta x whole square, we get this is delta L upon delta x whole square equals to 1 plus delta y upon delta x whole square. Now we apply the limit. You know that limit is the important part of the calculus. So here it is. When Q tends to P, when Q tends to P, delta x tends to 0, delta y tends to 0, and Q tends to P, delta x tends to 0, delta y tends to 0, and limit Q tends to P, delta x upon delta s upon delta L is equals to 1. Remember, this we have already done. Arc length upon chord length, when this limit is equals to 1, we have just proved, so we just apply this limit. Okay, so let's see. हमें चाप की लंबाई का अवकलज निकालना है, इसलिए चेंज इन आर्क लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं. व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ? मींस डेल्टा एस क्या चेंज हो रहा है. सो इट इज दिस. When Q tends to P, delta x tends to 0, delta y tends to 0, and this we have already proved. Now delta L upon delta S whole square into delta S upon delta X whole square equals to 1 plus delta Y upon delta X whole square. ये ध्यान रखना है. नोट मॉडिफाई किया मैंने इसको, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है इससे. डेल्टा L upon delta X, it is written like this. Therefore, when Q tends to P, we get this is limit Q tends to P, delta L upon delta S whole square, write like this, into limit delta x tends to 0, delta x whole square equals to 1 plus limit delta x tends to 0, delta y upon delta x whole square. It is this. Taking the limits under this condition, when Q tends to P, we will have this type of situation. It is delta L upon delta S. Here it is delta S upon delta L. यदि आप उसका रेसिप्रोकल करते हो, व्युत्क्रम करते हो, तो 1 ही आंसर आएगा, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना. This is 1, and this is the definition of derivative. This is ds by dx. This is 1 plus, and this is dy by dx whole square. Therefore, ds by dx
whole square equals to 1 plus dy by dx whole square implies ds by dx equals to under root of 1 plus dy upon dx whole square. This is very important result. So, rate of change of arc length. What is S? S means arc length. Ds by dx is under root of 1 plus dy by dx whole square. Now listen. Instead of dividing this, if we write dividing by delta y whole square, यदि पूरे इस पर्टिकुलर पार्ट को डेल्टा y होल स्क्वायर से डिवाइड किया जाए तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा y होल स्क्वायर हो जाएगा। हम इसी तरह से इसको प्रोसीड करते हैं तो जो फॉर्मूला मिलता है वो आपको मालूम है। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन, हम प्राप्त कर सकते हैं ds upon dy equals to 1 plus dx upon dy whole square. It is this. Okay, so it depends how to proceed this one. So if Cartesian curve is given, then ds by dx is given by this formula, ds by dy is given by this formula. Now you may have one question that what is here sign, it is plus or minus. तो x के साथ में यदि s इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन लेंगे, अदरवाइज हम नेगेटिव साइन लेंगे। यहाँ पर y के साथ में s यदि इंक्रीज हो रहा है तो ये रेट ऑफ चेंज जो है वो पॉजिटिव होगी, अदरवाइज दिस विल बी नेगेटिव। सो देयर इज नो कंफ्यूजन, ds upon dx is given by this and ds upon dy is given by this. So when Cartesian curve is given, the derivative of length of arc is given by these two results. Okay, so remember this. Now, what is the application of this? Find the perimeter of the circle x square plus y square equals to, suppose I write 1 for example. Find the perimeter of the circle x square plus y square equals to 1. Now note, x square plus y square equals to 1, radius is equals to 1. Perimeter is given by 2 pi r, so it is 2 pi into 1, it is 2 pi in lower classes. If we know this formula, यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये केवल सर्कल के लिए ही। सर्कल की जगह यदि मैं कोई और इक्वेशन लिख देता हूँ तो फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो हम इस रिजल्ट्स को थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला किया उससे हम वेरीफाई करते हैं, देखते क्या होता है। ओके, वी नो दैट ds by dx is under root of 1 plus dy by dx whole square. This is on integrating. समाकलन करने पर under root of 1 plus dy by dx whole square and here is dx.
Now this is circle of radius 1 and center is at the outside. Remember this. इस लेंथ को यदि कैलकुलेट कर लो यहाँ से यहाँ तक और इसका यदि मैं 4 टाइम्स करता हूँ तो एक कंप्लीट लेंथ दे देगा। यहाँ पर ये x इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर ये x इक्वल्स टू 0 है। मैं यहाँ से इसके लेंथ को मेजर करूँगा, यहाँ से इस तरह से लेंथ को, इस वाले पार्ट से ये आपको अपना, ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है और ये जो लेंथ है वो s। तो इसकी जो लिमिट होगी, मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, ये ध्यान रखना। सो दिस इज x इक्वल्स टू 1 to 0। Then we'll find this particular type of length. So I can find, let us suppose this point is A and this point is B. So if we use this particular part, then x square plus y square equals to 1 on differentiating 2x plus 2y dy by dx equals to 0. This implies dy by dx equals to minus x upon 1. So we place the value of dy by dx here, minus x upon y, so it will be x square on y square. Then instead of y square we can write 1 minus x square and we can simplify this. एरिया अंडर द कर्व आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। सो यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। और ये फर्स्ट ईयर के अंदर जो कैलकुलस का सेकंड बुक है दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस, उसके अंदर ये पूरा चैप्टर दे रखा है और उस पूरे चैप्टर का जो नाम है वो है चाप कलम, दैट इज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व। तो ये पूरा पार्ट हम उस समय डिस्कस करेंगे। मैंने केवल जस्ट आपको एक एप्लीकेशन बताया कि ये फॉर्मूला हमने क्यों डिराइव किया है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उस कर्व की जो कोई पर्टिकुलर आर्क है उसका लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हम तब यूज कर सकते हैं, उसका भी हम डेरिवेशन देखेंगे, ये 2πr कैसे आता है। तो आज हमने जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया है वो कार्टेशियन के लिए किया है, पोलर के लिए हम कल बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।